Ms. Parul Gupta to come to the stage to deliver her talk. Please. Dear ladies and gentlemen, it's with great pleasure that I introduce to you a culinary luminary who has captivated the hearts and taste buds of millions around the globe. Mrs. Parul Gupta, the esteemed celebrity chef hailing from the vibrant city of Bengaluru. Mrs. Gupta's culinary journey is a testament to her unwavering passion for food and cooking, which she inherited from her family roots, deeply embedded in the rich culinary traditions of India. After completing her education in gaining valuable experience in multinational corporations and banks, Mrs. Gupta embraced her true calling as a homemaker, where she found joy and fulfillment in nurturing her culinary skills. Driven by her boundless creativity and adventurous spirit, Mrs. Gupta embarked on a culinary adventure that would change the landscape of digital gastronomy forever. In 2017, she launched her YouTube channel Cook with Parul, where she shared her love for experimenting with cuisines and her innovative culinary creations. Within a short span of time, her channel gained global recognition, hurled her to the status of a renowned influencer chef on platforms like Instagram. During the unprecedented challenges of the lockdown, Mrs. Gupta's dedication to her craft shone brightly as she honed her culinary skills to perfection. Her channel soared a new height, trending at #1 on YouTube and gathering a staggering 1 million subscribers within a month. Her innovative recipes captured the attention of audiences across the country, earning her a greatly desired feature on the prestigious TV show Saas Bahu Aur Sajish. Furthermore, her remarkable achievements were recognized by Forbes India, naming her as India's top digital creator in 2022. To top it off, Mrs. Gupta was bestowed with the esteemed Creators United Global 2023 Food Creator of the Year award, cementing her status as a true culinary icon. Madam, we are indeed thrilled to have you today. Please join me in extending a warm welcome to Mrs. Parul Gupta, a visionary trailblazer in the world of gastronomy. Over to Mrs. Parul Gupta to enrich our knowledge on the importance and promotion of millets. Thank you. Very good afternoon, everyone. First of all, I would like to say a big thanks to IMS Foundation for inviting me and giving me this honor. My name is Parul Gupta, and I am running a YouTube channel by the name Cook with Parul from the last 6.5 years and working for the recipes, Indian recipes, so that we can make it very easily at home for the beginners, bachelors, working women, and simple moms, because these days the biggest challenge is to feed it to our children, because they are very much attracted towards the fancy foods which they see on the TVs, on the western countries and all. Here, I don't want to make you bore by talking of the scientific aspects of the millets, as we all know these days, but the challenge is here how to make millets in our incorporated in our daily life, so that we can make a easier recipes in a day-to-day life, instant recipes, so that everybody can make it instantly, a breakfast or a lunch or a brunch or in dinner. So my role comes here, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि सर ने काफ़ी चीज़ें साइंटिफिक बता दी हैं। अभी इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो हमारे लिए ये है कि मिलेट्स, हाउ टू रिप्लेस wheat and rice from our home and give a place to millets. When we talk about millets, the general women think millets वेरी टफ, नहीं बना पाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, खराब हो जाएगा, इतना सारा घी तेल भी वेस्ट हो जाएगा. सीरियसली वी आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली.
But we can make some interesting and very easy recipes by incorporating the small amount of millets in our day to day recipes. Like we can make the small veg pancakes with the millets. So what we need, we have to make the things with the millet which are very convenient to make for each and everyone, even for the beginner and the bachelors can easily make it. Like ready mixes, we can make it at home by using the multiple millets, and we can roast it and make a fine powder of it, and using some of the simple spices in that, and we can make the ready mix and keep it in our freeze, uh, so that we can, whenever we want, we can take out and make the laddus, or we can make pancakes, or make chilas or roti or parathas. It become very easier for us. As far as the question arises, as we should not make the mix the all millets and all. The we If we are thinking in the scientific way, we are eating a small amount of that. We are not eating a big amount so that it will harm to our digestion or something. The question is, when we are eating the millets, it become difficult to digest, but we are eating in a small amount. We're not eating a 6 or 10 chilas or a parathas or a pancake in a go. So there is no worry about it, that why we make the all the millets, it become difficult to digest and all that. इसको मत सोचिए. द थिंग इज, आप स्मॉल अमाउंट, आप जो रोटियां रोज में बनाते हैं उसमें आप 2 चम्मच भी मिक्स मिलेट्स का जो पाउडर है वो डाल लीजिए. बच्चों को भी पता नहीं चलेगा, एंड इजीली यू कैन मेक योर चपातीज, जो कि हार्ड भी नहीं होंगी. विद द क्वेश्चन इज दैट, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मिलेट्स को मार्केट में एक जनरल आटा या चावल की तरह से कैसे लेकर आए कि वो हर घर में यूज हो. क्योंकि डिजर्ट्स हों या वेस्टर्न जो डेलिकेसीज होती हैं, उनको हम डे टू डे लाइफ में अपने जनरल मास स्केल पर नहीं बनाते हैं. जनरली हम डेजर्ट्स वगैरह बहुत सम टाइम ही बनाते हैं. अब देखना ये है कि हम इसको कैसे बनाएं कि लोग, घर में जो बच्चे हैं, वो फैंसी फूड्स को मतलब घर में ही मिलेट्स के द्वारा खा सकें. लाइक वी कैन मेक चकलीज with the millets. Finger millets is having a large amount of calcium in that, which is very good for our bone health. तो उसको कैसे incorporate करें so that the people can eat, family can eat a good healthy food in that. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर द माई रोल कम्स कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा सबको ये बता सकूं कि आप अपने बच्चों के लिए, घर के लिए सिंपल सिंपल रेसिपीज मिनट से कैसे बना सकते हैं. इन आवर एंसेस्टर्स टाइम, लाइक दादी नानी के टाइम पर बाजरा खिचड़ी एंड बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, सब चीज़ें खूब बनाया करते थे. लेकिन दीज डेज हम लोग बिल्कुल हट गए हैं वहाँ से, और हम लोग हमेशा फैंसी वेस्टर्न फूड की तरफ भागते हैं. especially when we talk about the superfoods, we always think of quinoa, chia seeds, flax seeds. These are very ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पुराने टाइम पर हमारे दादा नानी सब ने यूज किए हैं. फ्लैक्स सीड्स को, जो कि बहुत सस्ते हैं इंडिया के अंदर, वेरी वेरी चीप दे आर. बट बाय यू कैन से बाय कनेक्टिंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज, वी आर मेकिंग इट एज अ सुपर फूड है. ये तो बहुत ही महंगा है, इसको कैसे इंकॉर्पोरेट करें, किनुआ बर्बाद हो जाएगा, हमें तो आता नहीं बनाना. तो हमें इसको हटकर पहले अपने मिलेट्स को देखना होगा कि जो हमारे कंट्री में एक सस्टेनेबल ग्रेन है. वाई वी कॉल्ड मिलेट एज अ सस्टेनेबल ग्रेन? बिकॉज इट रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, resilience, nutritional benefits, and where in the stage of the water scarcity today we are facing, this is the best way of sustainable environmental growth. So this is very important that we should now shift it from atta and chawal to millets. From my YouTube channel, what when we I started my YouTube channel Cook with Parul, that time always I'm thinking how to make the healthier food. कैसे बनाएंगे. टीवी पर कभी शेफ को देखते हैं तो वो बड़ी अट्रैक्टिव फैंसी चीज़ें बता देते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं ये हम नहीं बना पाएंगे. तो द थिंग इज़, मेरा जब स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, तो मेरा मकसद यही था कि हम इस खाने को आसानी से, सिंपल स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कोई बिगनर या कोई सिंपल जिसे खाना नहीं भी आता है बनाना, वो अगर देखे तो इजीली बना पाए और सबको खुश कर पाए. तो अगर आप जब हम बनाते कोई मंचूरियन, सपोज हम घर में बनाते, तो द क्वेश्चन इज, कॉर्नफ्लावर नहीं है, अब ये क्रिस्पी कैसे होगा. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी यही सोचती थी कि कैसे इसको करेंगे. मैंने घर में इस चीज़ को डिस्कवर करना शुरू किया कि इसका अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं. फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल कुक विद पारुल, माई ऑलवेज एम्ड that general women can make the things very fancy and attractive at home with the healthier way, with the home easily home available things like corn flour. We can use in place of the corn flour we can use the rice flour, so we can make the thing crispier. So these are the things very important. We should know the alternatives of all these things. Suppose now we are talking of the millets, so I should stick to the millets only.
तो मिलेट से हम बहुत वैरायटी के लड्डूज बना सकते हैं, और लड्डू भी बहुत ही फैंसी भी बन सकते हैं और मार्केट जैसे भी बन सकते हैं। उनकी सारी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप मखाना उसमें डालिए और उसको रोस्ट करके डालिए, रागी के साथ डालिए, तो वो बहुत हेल्दियर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिलेट को डे टू डे लाइफ में कैसे लाएं, क्योंकि हम हर वक्त किसी भी इवेंट में जाते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, मिलेट इन द मार्केट, मिलेट का ये, but the thing is how we make the recipes with the millet so easy way, and which are gluten free as well, and so that the people can make it at easily at home and adapt it in our daily life. So this is more important. So as the sir says about the scientific things about millets and soaking, roasting and all that. So this is very important for these millets to soak and roast these things. It takes little bit of time. So you can make the premixes of it and use it very easily, instantly. You can make a very delicious recipes out of that, like appe, idlis, dosas. So many things are there. So, is there any question if you want to ask to me, you can ask. First, you started with the pancakes. Takes vegetables and cut it and chop whatever you like it, and mix with the millet flour. Any of the millet flour, like this Rajgira atta or jowar ka atta, and then add little bit of curd in that. Okay, and then you can add some of the spices and make a small pancake and all, and make it more attractive by putting the cheese slice over it, pizza seasoning over it, so that the children can eat. Similarly, you can make the ragi nachos, very crispy, very tasty, and children would love to eat that. So slowly and slowly, as far as the habits are concerned, we can develop. If we think like that, no no no, we will not make, बच्चे नहीं खाएंगे, तो हम कभी उस चीज को घर में ला ही नहीं पाएंगे. इंपॉर्टेंट ये है कि आप छोटी छोटी रेसिपीज छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाइए, और उसको जब बच्चों को शाम को भूख लगती है, या हम कभी ऑफिस से लौटते हैं, तब हमें लगता है कि चाय के साथ हमें कुछ चाहिए, तो आप बना कर रखिए, और 2 to 3 pieces, then 4 pieces, then 5 pieces, it will come into 100. So this is very important. Like we can also make the millet pizza as well these days. If you find the recipe, you can find it on the YouTube channel. Millet pizza है, millets के आपके pancakes तो होते ही हैं, चीला है, और डिलीशियस स्वीट पैनकेक आप बना सकते हैं, चॉकलेट पैनकेक्स बना सकते हैं, इवन सैंडविच बन सकता है मिलेट से. आप सैंडविच मेकर में मिलेट का जो मैंने आपको बताया, एक आप इस तरीके का पेस्ट बनाइए मिलेट्स का, या फिर आप ज्वार का बना लीजिए, उसमें वेजीज डालिए, और उसके बाद उसमें कर्ड मिक्स करके उसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए, और उसे डायरेक्ट सैंडविच मेकर में आप डालिए, और उसको आप रोस्ट कर लीजिए. बहुत ही बढ़िया आपका सैंडविच की शेप का सैंडविच तैयार हो जाएगा मिलेट वाला. अब उसके ऊपर आप कुछ भी फैंसी लगाइए और बच्चों को सर्व कर दीजिए. कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर्ड डालने से सॉफ्ट हो गया, उसके अंदर वो बिटरनेस भी चली जाएगी. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क मी. Sorry, this is my request because I also hear you're an influencer. For her question, you have been talking about like, most of the recipes what you're talking is not a regular one. So what I feel is like, we are basically South Indians, eat a lot of like, tindis made of like rice. See the breakfast items. That can be a good starting point. So instead of rice, we can just start with 2 days in a week. We can just mix with the rice, little bit of millet, and whatever you make, either idli, dosa, or uppitu, or like khichdi, bisibelabat, anything, replace rice with soaked millet, and In it the will be equally tasty. in the And thali, out of the 4 items, if you can replace one of that from Correct. it, and then slowly and slowly inculcate this habit in the Yes. family, then it is possible. Correct. We cannot, no, daily we will eat the millets and all I'm that. not I'm No, talking that's about not possible. weekly once or Yes. twice. At least Weekly once. introduce one time one millet. Yeah. That is how we can just like change the habit of the people. Yeah, or you can make some laddus out of it. गर्मियों के लड्डू बना, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, गर्मियों के लड्डू आप बना सकते हैं by using makhana and all these things in that. You can see the recipe on my channel. It's very important because the sale is only be possible of the millets when the each and every household know how to use it in our daily life, right? Like this, she gave an example of the Kellogg's.
अगर कैलॉग्स का हमें पता ही नहीं हो कि उसको कैसे खाना है, तो हम उसको कभी अपनी डेली लाइफ में लाएंगे ही नहीं. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम उसको वाइड स्प्रेड करें कि इससे रेसिपीज हम क्या क्या बना सकते हैं और इसका हम ब्रेड को भी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. Correct. No, the Kellogg's It's is very a important. beautiful story where finally they started making uppitu, right? That shows like our cultural values. So instead of making like wheat rava uppitu, why not we try millet rava uppitu one day? That is there, and that's why like the influencers like you, if you can make it like with lot of veggies one uppitu, then your followers at least 20% of the people they make the millet, and I Yeah. think that will be a good Yeah, even with the point for methi, like the even millet with world. the, if you see the each and every state Thank you. traditional recipes, there is always a role of the millets. गुजरात की आप देखिए, राजस्थान की देखिए, मिलेट्स का बहुत यूज होता है, लेकिन स्लोली, क्योंकि अभी हम लोग वर्किंग है, हमें टाइम नहीं होता, तो हम या तो ब्रेड पे जाते हैं या फिर कुछ भी सिंपल बनाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ब्रेकफास्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको इजी कैसे बनाएं. द एस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फूड in the today's generation, because they want it very quick, instant. This is very important. तो हमें ये देखना होगा कि हम मिलेट्स को एक इंस्टेंट एस्पेक्ट में कैसे लाएं. अगर हम ये नहीं जानेंगे कि मिलेट से हम क्या बना सकते हैं, इससे क्या हम किस चीज को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है सब फेल हो जाएंगी और वो रैक्स में पैकेट लगे रह जाएंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. हाउ द एमटीआर का डोसा बैटर एंड ऑल दीज थिंग हर घर में मॉर्निंग में आता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कैसे रिप्लेस करें. तो उसके लिए जरूरत है कि वी शुड नो द रेसिपी ऑफ दैट. That's very important. That's why I always focusing on my YouTube channel, that we can make such kind of a recipes, so that we can use a little bit of the millet like jowar, bajra, or finger millets or anything in that recipe, so that people can inculcate the habit of using it at least. इट्स नॉट, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द ग्लूटेन फ्री एंड ऑल दैट, बिकॉज फिर वो होगा कि ये टूट रहा है पारुल मैडम, इसको कैसे ठीक करें. अभी हमारा एस्पेक्ट क्या है कि पहले हम उसको यूज में लाएं, उसके बाद देखें कि अब इसे ग्लूटेन फ्री के लिए दूसरा हम क्या बेसन डाल रहे हैं इसमें, सो दैट इट कैन बी बाइंडेड इजीली. क्वेश्चन यही होता है ना, हमने बनाया बिखर गया. तो रीजन इज कि उसमें हमें बेसन की जरूरत होती है, किसी ग्लूटेन चीज की जरूरत होती है, कि वो चीज हम आटा हम यूज नहीं करना चाहते सपोज, तो बेसन भी है, वी कैन यूज इट. हाई प्रोटीन, high end on antioxidant, and there are so many minerals in that millets. So it's very important कि हम उसको अब नई जनरेशन के सामने लेकर आए एक फैंसी वे में. Why not we can make the pizza with that? It's easy. You can do not need even the oven for that. You can make it in your daily wali kadhai pizza. So this is important. Anything if you want to ask related to millets or YouTube or something? Yeah. So, I believe there is no more question. And in case if you have any doubts or clarifications, you can talk to her later too, I believe. Is that okay? Please be seated. So, may I now request Miss Bhavana, yeah, to honor Miss Parul Gupta. It was a wonderful and informative session. Thanks a lot, Miss Parul Gupta. So as a part of this event, we also had cooking competition.